can be classified as a crystalline, okay, or non-crystalline material. Non-crystalline का means है amorphous material. Amorphous material. Okay, crystalline material means we know our metals. Okay, metals are crystalline. Okay, metals are crystalline. For example, your NaCl salt. Okay, zinc sulfide. These all are have a crystalline. These all are crystalline material. और amorphous material का जो well known example है, we can say glass. Okay, glass is your amorphous material. Now, what do you mean by crystalline material? Okay, so crystalline material means, okay, there is a order arrangement of atoms. Okay, or we can say the atoms are arranged. Okay, atoms are arranged orderly. Okay, इसी तरह का order है system के अंदर. And when we say amorphous material, okay, the atoms are arranged randomly. Okay, so there is a random arrangement of atom. Random arrangement, okay, of atom. So again, if I see crystalline material, okay, crystalline materials also can be classified as single crystal and polycrystalline material. Okay, so ये crystalline materials, okay, crystalline material, they can be classified as a single crystal, okay, or single crystalline material, and polycrystalline material. Polycrystalline materials. Okay, so what do you mean by single crystal and polycrystalline material? So if the order, this arrangement of its order, okay, exists throughout the crystal, okay, if there is a orderly arrangement throughout the crystal, then those materials are called single crystal. Okay, and if the order of atom is not throughout the crystal, that is limited to some specific regions, okay, then that is called polycrystalline material. तो polycrystalline का material का मतलब है you have a crystal structure, but there are somewhere there is a mismatch. Okay, somewhere there are defect. Okay, somewhere it changes its direction, or their material is crystalline, but there is some break. Okay, so it change the orientation, or there are some defects. For example, if I draw, I'm rubbing this one. Okay, I'm erasing this one. So suppose if I am सर तो एमोर्फस और पॉलीक्रिस्टलाइन में डिफरेंस मतलब क्या होता है ना, दोनों में तो अमरफस में तो कोई ऑर्डर होता नहीं है. ओके, कोई एटम का कोई अरेंजमेंट होता नहीं है. ओके, या यू कैन कॉल इट वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. बट इनमें पॉलीक्रिस्टलाइन में ये मटेरियल इज क्रिस्टलाइन. हाँ सर, आपका वीडियो लैग हो रहा है. लैग कैसे हो रहा है? नेट तो आ रहा है मेरा. नहीं सर, ठीक है सर. Okay, so for example, if I draw, okay, this crystal, okay, so this is, say, my atoms. Okay, they are arranged in a square lattice. Okay, so these are my atoms. Okay, now this is my this whole is a single crystal, क्योंकि कहीं पे भी crystallinity break नहीं हो रही है. अगर throughout the crystal अगर इस तरह का सिस्टम है कि रेगुलर अरेंजमेंट है, ऑर्डर अरेंजमेंट है, देन इट इज कॉल्ड सिंगल क्रिस्टल. ओके, और अगर इसी सिस्टम को if I break, okay, somewhere, for example, now I have a system, okay, which has the same crystal, say this is lattice quantity, okay, which is the same crystallinity. Okay. So suppose this is my another crystalline region. Okay, so ये पोर्शन भी क्रिस्टलाइन ही है, ये पोर्शन भी क्रिस्टलाइन है, but between there are some regions, okay, where the crystallinity is not maintained. Okay, there is some break. So this region, okay, this region is called grain boundaries. Okay, this region is called your grain boundaries.
grain boundary, or grain boundary is GB, short we write grain boundary GB. Okay, so that means the crystallinity is maintained a limited period of limited region. Okay, and these small regions, okay, these small regions are called grains. This, because these small regions are called grains or crystallites. Crystallites. Okay, so these are grain. Okay, this is single crystal grain. Okay, अगर material पूरा ही ऐसा ही हो, then it is called single crystal grain or single crystal material. Okay, अगर your material is composed of these small grains, okay, then it is called polycrystalline material. Now this is my grains. Okay, this is the grains. सर हाँ सर हाँ बोलिए. एक बार ये वाला फिर से समझाइए ना, जैसे आपने बताया कि हमारे हम्म. क्रिस्टलाइन के पैटर्न में अगर ब्रेकेज हो और जो बीच में हाँ गैप हो वो ग्रेन बाउंड्री ना. हाँ ग्रेन बाउंड्रीज है. ओके, ओके ग्रेन बाउंड्रीज जहाँ मिसमैच है या डिफेक्ट्स हैं. हाँ बोलिए. ओके ओके. अच्छा ओके, सर, वो मतलब जहाँ पे डिफेक्ट है हाँ वहां पे भी लेकिन क्या एटम्स प्रेजेंट होंगे ना. एटम प्रेजेंट होंगे पर ऑर्डर ऑर्डर नहीं होगा. ओके, ओके एटम एटम प्रेजेंट होंगे, ऑर्डर नहीं होगा, या एटम गायब भी हो सकते हैं, डिफेक्ट भी हो सकते हैं, वैकेंसी भी हो सकती है, किसी और तरह का डिफेक्ट हो सकता है, एक के ऊपर एक दूसरा एटम आ जाए, बट ये आपका जो ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं होगा. एक के ऊपर एक एटम आ जाए, दो एटम के बीच में एक छोटा एटम आ जाए. ओके, किसी तरह से क्रिस्टलिटी ब्रेक हो जाए, so that region is called your grain boundaries. For example, if I want to draw a single crystal material, okay, so इसमें कोई ब्रेक नहीं है, we have no breaks. Okay, so this is my single crystal. Okay, और इसी मटेरियल को if this is a crystalline region wise, okay, if I break this some regions, okay, this is my region, यहाँ पर क्रिस्टलाइन है, यहाँ पर क्रिस्टलाइन है, ओके, यहाँ पर क्रिस्टलाइन है, ओके, यहाँ पर क्रिस्टलाइन है लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो गया, इस क्रिस्टलाइन. ओके, सो दिस इज क्रिस्टलाइन, ओरिएंटेशन चेंज हो गया, सेम क्रिस्टलिटी इधर भी है. ओके, बट क्या है, दिस they are composed of small single crystal regions. Okay, small single crystal regions. Okay, so this will be your called your polycrystalline material. Polycrystalline. Okay, so the difference is clear. Okay, अगर आपका throughout the crystallinity is maintained, periodic arrangement is maintained, that is your single crystal, or if it is composed of small regions, okay, where you have crystallinity but orientation is changed or some defects are there in between, then that material is called polycrystalline. और इनके बीच में जो भी रीजन होता है, that is called your grain boundaries. GB, Sir, it is called हाँ grain boundaries. हाँ बोलिए. प्लीज ऐसा ही एक एग्जांपल अमरफोस का दोगे क्या? ऐसा हाँ, अमरफस में क्या होगा, अमरफस मटेरियल के अंदर you have amorphous material, okay, but there is no order. Okay, the atoms are randomly arranged, or there may be some portion little bit region there is crystallinity, then crystallinity breaks. Okay, so you can just represent amorphous material that dot. Okay, so this is suppose this is your amorphous material, randoms. Okay, random points are there. नो पीरियोडिसिटी, कोई किसी तरह कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, किसी तरह की सिमेट्री मेंटेन नहीं हो रही है. मतलब किसी भी डायरेक्शन में एमरफस मटेरियल मतलब सब हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अरेंजमेंट नहीं है, कोई पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है, कोई स्ट्रक्चर कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है. ओके, रैंडम है, टोटल रैंडम्स है. ओके, यहाँ पे शॉर्ट रेंज के लिए है, ओके, थोड़ा छोटी सी रेंज के लिए है, फिर ब्रेक हो गया, फिर थोड़ी सी रेंज के लिए, फिर बहुत के लिए ब्रेक हो गया. ओके, नॉट लाइक क्रिस्टलाइन. ओके, सो ये इनमें क्रिस्टलाइन दैट अप टू माइक्रोमीटर डिस्टेंस इट कैन बी, ग्रेन्स कैन बी एज बिग एज 100 माइक्रोमीटर्स, बिग भी हो सकते हैं. ओके, 50 माइक्रोमीटर. सो देयर इज स्मॉल इनफ रीजन ऑफ क्रिस्टलिटी. ओके, देयर कैन बी नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल जहां पर आपका 1 माइक्रोमीटर से भी कम हो सकता है, ये जो रीजन है. ओके, but they are crystalline material which have a 100 up to 50 micrometer, 30 micrometer, 100 micrometer distance तक grains बड़े हो सकते हैं. नैनो क्रिस्टलाइन में grains छोटे होते हैं. Okay, so this is the difference between your crystalline and non crystalline material. Now crystal क्या है? Okay, so in order to explain crystal we need a mathematical concept, lattice. Okay,
and basis. So basically, what is your crystal? Okay, so your crystal is basically equivalent to a lattice and plus basis. Okay, so basis क्या होता है? Basis होता है atom, okay, or group of atoms, or group of atoms, molecules. Okay, basis. And what is lattice? Lattice is, okay, your infinite arrangement of your point. Lattice is a basically mathematical concept. Okay, so how can I define a lattice? Okay, so there are lattice also, there can be two types. Okay, so lattice also, there are two types of lattice. One is called Brevis lattice, and another is called non-Brevis lattice. Okay, non-Brevis lattice. Okay, so let me explain this by a 1D lattice. Okay, let me draw a 1D lattice. So lattice क्या होता है? So lattice की दो property होती है. Any lattice which is called Brevis lattice, it has a two properties. Okay, number one. Okay, suppose this is my 1D lattice. Okay, so this is my lattice constant A or primitive vector A. Okay, A1. Okay, that is equal to AX. So lattice की क्या खासियत है? Okay, so a Brevis lattice is, okay, definition लिख रहा हूँ मैं. A Brevis lattice is, okay, is an infinite array, is an infinite arrangement, okay, arrangement or infinite arrangement of points, infinite arrangement of points in space, okay, an infinite arrangement of points in space. Okay, but if you have a infinite arrangement of atom, okay, इसका मतलब ये नहीं कि lattice हो जाएगा. So lattice की कुछ properties है Brevis lattice की. Okay, so this is example of 1D lattice. Or let me draw a 2D lattice also. So सर 1D lattice में आपने फॉर्मूला क्या लिखा है? A1 bar equals to Ax cap. Okay, suppose this direction is x. Okay, so A1 is what? A1 is your primitive vector. Okay, Ax cap. Okay, so magnitude of A1 is your A. Okay, so this is a primitive, A1 is a primitive vector. Primitive. मतलब सर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स. हाँ बता रहा हूँ, primitive vector है. Okay, so now, so this was a 1D lattice. Okay, let me draw a 2D lattice also. Let me draw a 2D square lattice. जो पहले draw किया था वही draw करते हैं simplest के लिए. This is my 2D square lattice. Okay. This is 2D square lattice. Okay. 2D square lattice. Okay. Now here also I can define my primitive vectors. Okay, so it can be A1 can be equal to Ax cap. Okay, if the square lattice, this will A1, it will be equal. Okay, so you can write, so this you can say this is a rectangular lattice, then we can differentiate in A2 and A1. Okay, so there is there's a gap in distance. So A2 I can write what? I can write B y cap. Okay, so here A1 A2 are the primitive vectors. Now lattice की definition क्या है? Lattice का first definition Brevis lattice की कि if you go to any atom, okay, its surrounding is same. Okay, if you go to any atoms, okay, और यहाँ पे जाओगे तो इसका surrounding same है. Okay, suppose ये atom A है, इसके यहाँ पे A है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है. If you go here also same situation. Here भी A, same distance में same है. Okay, so the surrounding of each atom is same. That is the first requirement of Brevis lattice. Okay, so number 1 point is, okay,
number one, it is the lattice looks, okay, exactly same, okay, when viewed from any, when viewed from any lattice point. Okay, you go to any lattice point, your lattice will look like the same. Okay, this is the number one thing. Okay, and other thing is there, if you have a Brevis lattice, okay, so the Brevis lattice any point, okay, the any position, okay, the position of any atom, okay, the position, number two, the position of, okay, any point, atom to यहाँ पे है नहीं, lattice any point, okay, can be given by primitive lattice vectors. Okay, suppose it is a 1D, so I can write R equal to n a cap, okay, R equal to okay, n a1 plus m a2, okay, if it's 2D. Similarly, if we have a 3D, okay, I can write R, the position vector, in terms of a1 plus a2 plus L a3. So suppose if I take this point is origin, okay, so then this is equal to, the position vector is equal to lattice vector A. Okay, अगर मुझे इसकी position लिखनी है तो मैं क्या जाऊंगा, इस डायरेक्शन में A1, इस डायरेक्शन में A2. ओके, तो इस पॉइंट की लिखनी है तो मुझे क्या आ जाएगा, R इक्वल टू A1 प्लस A2. ओके, सपोज मुझे एटम से एटम A है, एटम A का लिए पोजीशन वेक्टर लिखना है, सो आई कैन राइट R इक्वल टू A1 प्लस A2. ओके, सिमिलरली से दिस पॉइंट इज B. If I want to write the position vector for B, okay, so position vector of B क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में 2A1 है, okay, and this direction में A2 है, so I can write A2. Similarly, suppose this position is C, okay, then I can write the position vector for C. I can write what, 2A1 plus 2A2. Okay, so so A1 A2 is what, A1 A2 are your primitive vectors. Okay, A1 A2s are your primitive vectors. So A1 A2 are primitive vectors. Okay, and this is your n, your what I'm writing here, n m l. Okay, they are integers. Okay, n m, okay, n equals to what, 0 plus minus 1, okay, plus minus 2, so on. Similarly m, okay, 0 plus minus 1 plus minus 2, so on. So these are integers. ऐसा नहीं है कि कहीं बीच में यहाँ पे कोई एटम रख दो. Okay, then we cannot represent in terms of position, in terms of this primitive vectors. Okay, so and these primitive vectors, they are not linear. Okay, they are not linear. Okay, so they are not linearly independent. They are linearly independent. Okay, not dependent. Okay, so they linear नहीं होते हैं, अलग डायरेक्शन में अलग लेने पड़ेंगे. Okay, so this is your Brevis lattice. So पहली first thing is the lattice should look same, exactly same from if you viewed for any point. Number two, the position of any vector can be written as a in terms of this your primitive vectors where n equal to 1. Okay, ये definition है crystal की. तो पूछे crystal की definition क्या है? Okay, so crystal has translation symmetry. इसी को बोलते हैं translation symmetry. Okay, you move the crystal from any direction with lattice vector. Okay, the crystal will be same. Okay, so this is your called the crystal has a translation symmetry. This is called translation symmetry. सर, आपने जो ये पोजीशन वेक्टर लिखा है ना, एक बार प्लीज फिर से बताएंगे. ये वाला. यस सर. हाँ, सपोज मुझे A का पोजीशन लिखना है and this is my 0 0. Okay, now if I want to reach up to A here, okay, so how can I, this is A1 and this is what, A2. Okay, so ये summation है, or if A1 equal to A2, this will be root, the magnitude will be root A. Okay, similarly if I want to reach to B, so this is origin, so I have to travel from here to here,
then I will travel to here. That means in x direction I'm traveling 2a. 2a1 lattice vector, 2a distance. Okay, and b direction I'm moving what? A2 by a2. So this is my lattice position of b vector. Okay, similarly if I want to move to rc, so I'll come from here to here, then I'll come to here to here, then I'll move here. Okay, so this total. Okay, this is my vector. This is vector rb. This is a vector rb. Okay, and this whole is vector is rc. Clear? सर ये तो Yes, पोजीशन वेक्टर की तरह हो गया ना। हाँ, तो वैसे तो वही तो बोल रहे हैं, आपकी उसकी जो पोजीशन है वो यू कैन राइट, अगर ये पीरियोडिक नहीं हो a1 a2 तो कैसे लिखोगे? अगर ये लैटिस प्रिमिटिव वेक्टर्स नहीं देखे हो, देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, तो फिर पोजीशन कैसे लिखोगे? अगर आपको ये पता नहीं डिस्टेंस वेरी हो रही है, कहीं पे वेरी हो रही है, देन यू कैन नॉट राइट इन दिस वे ना। यस If you मींस can- हम लोग को एक ओरिजिन अपना मान के आगे बढ़ना होता है इस पे। हाँ, अगर किसी को निकालना पोजीशन, तो किसी को ओरिजिन मानना पड़ेगा निकालने के लिए। सर मतलब सब हाँ? यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में ही ये वैल्यू हो पाएगा ना। भी अगर इस तरह अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, कोई अरेंजमेंट है, एक्स डायरेक्शन में लेटेस्ट कांस्टेंट है, बी डायरेक्शन में लेटेस्ट कांस्टेंट कुछ है, सी डायरेक्शन कांस्टेंट है, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा, तभी तो तुम लिख पाओगे इस तरह के इन लेटेस्ट वेक्टर के तरह में। अगर ये a1 a2 ही नहीं है, कोई रैंडम स्ट्रक्चर है, तो कैसे लिखोगे? तो ब्रेविस लैटिस लैटिस का ये मतलब कि कुछ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट। सो नाउ दिस इज लैटिस, दिस इज नॉट क्रिस्टल, दिस इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन इनफाइनाइट अरे। हाँ बोलिए सर। एक्सेस जो हम लेते हैं कार्टेशियन, वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, लेकिन आपने बोला था कि ये लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ही है। अगर डिपेंडेंट लोगे तो आपस कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये अलग लीनियरली इंडिपेंडेंट है a1 a2। हाँ, सो दिस इज योर। हाँ बोलिए। We take origin in the crystal anywhere. Yeah, anywhere. Okay. Okay, sir. Okay, so this is your crystal. If you are saying the crystal is, if you are assuming the length is infinite length, na? Okay, so this is to say I can write position only vector in terms of this independent primitive vectors. Okay, this is one thing. And now this a1 a2 is not unique. Okay, a1 a2 is not unique. Okay, for example, primitive lattice vectors are not unit. Okay, so primitive lattice, the choice of primitive lattice vector are not unique. Okay, what is the mean? इसको रब कर दूं। Yes, sir. The choice of primitive vector is not unique. That means it is not fixed in any crystal that you will take a1 a2 same or something particular. Okay, for example, in particular this case, okay, I can take my a1 is this direction, a1 I can take a x cap, okay, and a2 I can take this one, I can take a2 this one. Okay, मेरे a2 क्या हो जाएगा आपकी बार? If I take this is origin, okay, so ये a2 क्या हो जाएगा? a2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? a2 equal to a I cap plus j cap. So a x cap plus b y cap. Okay, so I can choose this a1 a2 also my primitive lattice vector. मतलब इन दो पॉइंट्स को लेके भी मैं कहीं भी पहुंच सकता हूँ. Okay, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहुंचना है तो a1 चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, I come here. Okay, so I can write my point A. The coordinate of point A also I can write a1 plus a2. Okay, where a2 is now this one, I can go here, I can come here. Okay, in this way also possible. So हमारा जो A2 है इसमें, सर हमारा जो A2 है इसमें डायगोनल है ना, जो हमने अभी लिया है, इसमें जो पैरामीटर हमने डायगोनल वाला लिया है। हाँ, डायगोनल लिया है। सर उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमें A1 की क्यों जरूरत पड़ रही है? हम तो सीधा A2 से इस पॉइंट पे, हाँ, इस पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, सही बोल रहे हो, इस पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ओके, वी कैन डायरेक्ट A2, वी कैन रीच डायरेक्ट। और सर बी पे, हाँ, अब बी पे पहुंचना है, बी पे पहुंचने के लिए तो पड़ेगी सर। पहले ऐसे जाओ, फिर ऐसे आ जाओ। यस सर। ओके, पहले जाओ आरबी,
So you can go first, you can write A2, okay, and then A1, okay. Similarly इसी तरह से C पे जाना, C पे भी जा सकता है, C पे क्या हो जाएगा A1 A2 सर वो 2A1 होगा ना सर आरबी में पहुंचने के लिए? ट्वाइस A2 twice A2 से पहुंच जाएंगे सर सी पे, तो बस सीधे पहुंच जाएंगे twice A2 से, डायरेक्ट टू okay. तो इसको अब इसको देखो कैसे, जैसे मुझे अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, अगर मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है, अगर ये परमिटिव वेक्टर ले लूं तो एरिया क्या आएगा A1 क्रॉस A2, इतना आ रहा निकालो। A1 क्रॉस A2 कितना आ रहा है? कौन से का निकालना सर? इस वाले का, पहले 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 केस में, फर्स्ट केस में, ओके। A1 A2 कितना आ रहा है? सर ए बी जेड के, हाँ तो मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड ए लिखा बी है जेड तो के, मैग्नीट्यूड तो ए बी खाली मैग्नीट्यूड लिखा है, ओके। अगर ये वाला ले लो, अगर ये वाला ले लो सेकंड केस में, सेकंड केस में ले लो A1 क्रॉस A2, तब कितना आ रहा है? तब कितना आएगा? तब भी सेम आएगा, सेम ए आ भी रहा है, आएगा, तब भी आएगा सर, ये सर सेम ही आएगा। सेम आ रहा है, ओके। दैट्स व्हाई द चॉइस ऑफ प्रिमिटिव लैटिस इज नॉट यूनिक, ओके। सर तब भी सेम कैसे आएगा सर? निकालो ना, आप निकाल के देखो, मल्टीप्लाई करो A1 A2 को। सेकंड मतलब कौन सा बोल रहे हो आप? ये सेकंड वाला A1 ये A2 ये, okay. So that's why the choice of unit vector is not your unique, okay. So this is was your lattice, ए okay. स्क्वायर प्लस ए भी नहीं आएगा? अरे b x को x में मल्टीप्लाई जीरो नहीं हो जाएगा जब साइन करोगे? यस सर, सॉरी। Okay, so this is your thing. Now one more thing, ये तो हो गया आपका लैटिस, ओके, और ब्रेविस लैटिस, ओके। नाउ जब इस लैटिस के ऊपर, जैसे मेरे पास पॉइंट्स हैं, आई हैव सम रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ओके। व्हेन आई कीप बेसिस ऑन दैट, इसके ऊपर कुछ एटम रखूंगा, एक एटम रखूंगा, सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम शुड बी सिमिलर, देन ओनली इट इज ब्रेविस लैटिस, okay. Now if I keep some atoms on top of this one, okay, this is atom, यहाँ पे atom, यहाँ पे atom, यहाँ पे atom, यहाँ पे atom, ये मैं roughly कर रहा हूँ, so then it is called your crystal, okay, then it is called your crystal, okay. One thing, okay. Now suppose कि crystal plus lattice plus basis is your crystal, okay, and all the atoms should be same, that is the thing. Now suppose मेरे पास एक crystal है, 2D crystal है, ये 2D lattice है, सर हाँ। लैटिस और बेसिस में क्या डिफरेंस है सर? लैटिस तो एक कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इमेजिनरी पॉइंट्स, ओके। हमारे पास कुछ स्पेस में पॉइंट्स हैं, वो हमारा लैटिस है, और उस पॉइंट पे कुछ एटम रख दो तो वो क्रिस्टल बन जाता है। क्रिस्टल इज अ रियल थिंग। बेसिस मतलब कि एटम है? बेसिस मींस एटम, बेसिस मींस एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ओके। तो किसी भी रेगुलर अरेंजमेंट है, ओके, उसके ऊपर अगर आप पॉइंट रियलिटी में क्रिस्टल रख दो तो लैटिस प्लस दिस योर एटम्स, दैट विल बिकम योर क्रिस्टल, ओके। नाउ मेरे पास एक 2D थिंग है, 2D स्क्वायर लैटिस है, रेक्टेंगुलर लैटिस बोल दो, जो भी है, ओके। आई हैव अ लैटिस, ओके। नाउ अगर मैं इस पे एक एटम यहाँ रख दूं, छोटा एटम, ओके, दिस इज डिफरेंट, से दिस एटम ए, दिस एटम बी, और ये रेड, दिस इज ऑरेंज, ओके, सम डिफरेंट कलर, then this is not called your, then this is not a Brevis lattice, okay, then this is your non-Brevis lattice, and it is your non-Brevis lattice. So lattice can be Brevis, lattice can be non-Brevis, okay, क्योंकि now the surrounding is not same, okay. अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो इसका सराउंडिंग में एक एटम ये, एक ये है, तो इसके आ जाओ तो एक बड़ा वाला है, दो बड़े वाले हैं, okay. Then the surrounding is not same. When the surrounding is not same, that is called your what? Non-Brevis lattice. Okay. सर ये वाला पॉइंट थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक एटम है ना,
अब मैं इस एटम के पास आ गया, इसकी सराउंडिंग में क्या क्या है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, एक इधर एटम है, एक इधर एटम है, एक इधर एटम है, एक इधर एटम है, ठीक है। पर ब्रेविस लैटिस की डेफिनेशन क्या है, किसी भी एटम पे चले जाओ, किसी पॉइंट पे चल जाओ तो सराउंडिंग सेम होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे आ गया तो मेरी सराउंडिंग चेंज होगी ना, यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में तो ये था, ये था, ये था, ये था, इसकी सराउंडिंग में क्या है, ये है, ठीक है। फिर इधर ये है, इधर तो कोई है ही नहीं, सराउंडिंग एटम है ही नहीं, छोटे वाले एटम है, ऐसे बड़े एटम तो है ही नहीं, मतलब सिमिलर नहीं है ना। मैं किसी पॉइंट पे जाऊं तो क्रिस्टल शुड लुक लाइक सेम, मैं किसी पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं सर मोनो एटॉमिक लैटिस में तो सेम होगा ना। हाँ? सर मोनो एटॉमिक यदि बेसिस हुए तो सेम होगा ना। बता रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या, ये जो लैटिस है, ये that is a combination of two lattices, okay, these are interpenetrating lattices, okay, so this is the क्या है, तो नॉन ब्रेविस लैटिस क्या होता है, नॉन ब्रेविस लैटिस इज योर कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके, combination of brevis lattices, okay, okay, so this is a combination of interpenetrating okay, brevis lattices, okay, brevis lattices, or you can say your non-brevis lattice is where basis is composed of more than one atom, okay, so when in non-brevis What is lattice the meaning of basis is interpenetrating? interpenetrating, दो lattice mixed हैं आपस में, Okay. okay, mixed है, so or you can say basis is composed of more than one atom, okay, then that lattice is called Brevis lattice. Now I can assume this my basis is this is one atom. If I combine this atom, okay, if I combine these atoms, then this will become your Brevis lattice, okay. So this can be thought of, okay, this can be thought of as a Brevis lattice, okay, if we take two atoms at each lattice point, okay, if I take two atoms per lattice point, now if you go anywhere the surrounding is same, and I can write the position vector, this combined atom, the position of this combined atom, okay, using my primitive lattice vectors, okay. Now non-Brevis lattice में क्या होता है, if you want to explain the non-Brevis lattice, then you have to use the symmetry of Brevis lattice as well as the symmetry of this group of atoms or molecules, okay. तो आपको दो तरह की सिमेट्री चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, एक सिमेट्री ऑफ योर लैटिस एंड सिमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल अराउंड दिस पॉइंट, okay, that's why there is a 32 points groups, okay, because हमको इस पॉइंट्स के अराउंड भी सिमेट्री देखनी है, ब्रेविस लैटिस की सिमेट्री भी देखनी है, देयर आर टोटल 230 स्पेस ग्रुप, ओके, ब्रेविस लैटिस की सिमेट्री और इसकी सिमेट्री मिला के पॉइंट्स भी, देयर आर 32 पॉइंट्स ग्रुप्स, ओके, so we will discuss this thing, so this is your example, हाँ सर यहाँ हम कंबाइन करते, इसका मतलब ऐसा है क्या कि वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं होते, मतलब उनका मतलब आप आप हो जाता है, इसको देख सकते हो कि इंटरपेनिट्रेटिंग है, मतलब वो है नहीं एक्चुअली, मतलब है तो रियल तो यही केस है, पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक तरह से दो को एक के अंदर एक घुसेड़ दिया, मतलब इसके अंदर इंटरपेनिट्रेट कर दिया है, ओके, मिक्स कर दिया है, एक्चुअली भी तो नहीं है, आप मतलब वो अकेले हम देख ही नहीं सकते, हाँ मतलब अकेले उनका देख नहीं सकते, अकेले इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, साथ में ही है, बट यू कैन थिंक ऑफ लाइक दिस, ओके, or you can assume that there is a more than one atom on one lattice point, okay, basis is composed of more than atom, then that is your non-Brevis lattice, okay. Non-Brevis lattice के लिए you don't symmetry this one, you need symmetry of molecule also, okay, and एक famous lattice है, हाँ बोलिए, हाँ बोलो। सर ये जो आपने अभी पॉइंट बोला था कि सराउंडिंग सिमिलर होनी चाहिए, हाँ,
सर वो तो सर इसमें है सिमिलर, वैसे 2 एटम होने के बाद भी, मतलब कि सराउंडिंग तो सर रिपीट होने के हिसाब से देखेंगे ना हम। सराउंडिंग मतलब सेम होना चाहिए आपको, दिखना भी सेम चाहिए। अभी इसको तो ये आइटम दिख रहा है, इसको ये आइटम दिख रहा है, इसको छोटा आइटम दिख रहा है, इसको क्या दिख रहा है, तो छोटे आइटम दिख रहे हैं। यहाँ से देखो तो इसको ये बड़ा आइटम दिख रहा है। सराउंडिंग मतलब एग्जैक्टली द वे आई एम सेइंग, दिखने में है, रिपीटिंग का नहीं है। क्योंकि अगर ये इस तरीके से है और इसको अगर मुझे आप लेटेस्ट वेक्टर में लिखना है, अब एन एम ये तो आपके इंटीजर्स है ना, ये थोड़ी आपके फ्रैक्शंस हैं। ओके, आप you can say this is one lattice and these small atoms are making another lattice. That's why these two lattices are interpenetrating. Okay, एक lattice है, एक separate lattice है, interpenetrating है। और you assume कि ये lattice तो है, but इसका जो एक point है, इसमें 2 atoms हैं, composed दूरी 2 से भी कोई atoms। मतलब है हाँ? सर, दूरी से भी कोई मतलब है, मतलब ये एटम दो समान दूरी पे होंगे ऐसा कुछ? Environment look like a same, मतलब everything should be symmetric, everything should be same। मैं कहीं भी बोलूंगा ना मुझे सबको सेम दिख रहा है, then it comes everything distance, क्या पार्टिकल है, एटम। अगर यहाँ पे मैं एटम इसको हटा के इसको एटम ए, इसको एटम बी कर दूं, तब भी नॉन ब्रेविस लैटिस है। ओके, क्योंकि ये जैसे ये सपोज ये रेड है, ये ब्लू है, ये रेड है। ओके, अब ब्लू को तो रेड दिख रहे हैं, ओके, ब्लू को तो रेड दिख रहे हैं, और रेड को क्या दिख रहे हैं, ब्लू को तो रेड दिख रहे हैं, और रेड को क्या दिख रहे हैं, 2 ब्लू को तो रेड दिख रहे हैं, और रेड को 2 ब्लू दिख रहे हैं। Yes, ये sir. भी नॉन सिमेट्री है, ये भी। हाँ, हर एटम को अपने आसपास सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखनी चाहिए, तभी वो। हाँ, एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम चीज दिखनी चाहिए। ओके, देन इट इज ब्रेविस लैटिस। या हमने लैटिस एटम्स पे दोनों एटम कंबाइन किए तब हमें लैटिस मिला, मतलब वो बाहर रखा था, इसके वजह से पहला केस आ रहा था ना, नॉन ब्रेविस लैटिस था। हाँ, सिंपल याद रखो ना, अभी ब्रेविस लैटिस में एक पॉइंट है, एक लैटिस पे एक पॉइंट है। नॉन ब्रेविस में एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब जैसे मेटल होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो तो सारे के सारे उनपे तो सारे ब्रेविस लैटिस होते हैं। ओके, उनमें तो वो होता नहीं कि एक पे 2 पॉइंट हो, लेकिन NaCl का स्ट्रक्चर है, आपका जिंक सल्फाइड है, मोर देन 2 एटम्स हैं, तो उसका लैटिस कैसे बनाओगे? तो उसमें अज्यूम करना पड़ता है एक पे कोई मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, जिंक ऑक्साइड है, कुछ और तरीके का है, तो उसमें एक लैटिस पॉइंट पे तो एक से ज्यादा एटम्स होते हैं। ओके, तो उनकी अलग से सिमेट्री होती है, तो उसमें अलग से सिमेट्री होती है। तो दिस इज योर ब्रेविस लैटिस। ओके, तो एक एग्जांपल और है नॉन ब्रेविस लैटिस का, लेट मी डिस्कस दैट वन आल्सो। हनीकॉम्ब लैटिस। ओके, हनीकॉम्ब लैटिस जो ग्राफीन है, 2 डायमेंशनल मटेरियल हनीकॉम्ब लैटिस, दैट इज आल्सो योर नॉन ब्रेविस लैटिस। ओके, सो इफ आई ड्रॉ ए हनीकॉम्ब लैटिस, ओके, याद रखने के लिए कि ये नॉन ब्रेविस लैटिस का एग्जांपल दो। ये हनीकॉम्ब लैटिस इज योर example of your this one non brevis lattice. Okay, this is your atom. Okay, this is the atom. In this way you can keep on drawing. Okay, okay, so this is your basically इसको बोलते हैं honeycomb lattice. honeycomb मधुमक्खी की छत्ते से honeycomb lattice. Okay, and this is also non brevis lattice, non brevis lattice, and इसको भी हम brevis lattice बना सकते हैं if we combine 2 atoms. Okay, if you combine 2 atoms together, then this will also become your brevis lattice. But as such, it is a honeycomb lattice is a example of your non brevis lattice. अगर आ जाए क्वेश्चन तो कभी देख लेना। ओके, ठीक है। So this was your how much time is left? Okay, 10 minutes or more, so I can discuss one more thing. सर ये कैसे नॉन लैटिस ब्रेविस हो रहा है? क्या क्या होंगे फिर? हाँ, इसके लैटिस पैरामीटर। लैटिस हेक्सागोनल में क्या होता है? हेक्सागोनल में लिख दो ये A1 और ये A2. Okay, and this is your and this is 120. Okay, and A1 is equal to A2. Okay, the magnitude of A1
A2 is equal and this phi सर the angle, हाँ बोलिए। ये दोनों कंबाइन करने से ये कैसे, मतलब ब्रेविस लैटिस बीच में जो एटम है उनके लिए अरेंजमेंट डिफरेंट ही रहेगी ना, अगर हमने दोनों बीच में मतलब सबको सारे एटम्स को एक एक एटम मान लेंगे, ओके। फिर ये दोनों मिलके एक पॉइंट हो जाएगा ना, ये एक पॉइंट हो गया, 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 एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, देन इट विल लुक लाइक योर ब्रेविस लैटिस, ओके। सर यहाँ तो सराउंडिंग में सेम ही एटम है ना, सेम तो कहाँ है? कैसे ये नॉन ब्रेविस? सेम कहाँ है? सेम कैसे बताओ, सेम कैसे? इसकी सराउंडिंग में ये एटम है, फिर दो इधर है, ओके। इसकी सराउंडिंग में ये दो एटम है, इस साइड ये एटम है, इसके इस साइड एटम कहाँ है? ओके, इस साइड एटम कहाँ है? तो सराउंडिंग सेम कहाँ है भी? इसको 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 ये दिख रहा है, तो इसको भी ये वापस ये दिखना चाहिए, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, ओके। इसको ये इधर दिख रहा है, इसको ये इधर दिख रहा है, सराउंडिंग तो मतलब मतलब हम हाँ, सर सब कुछ मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर के शेप में होगा तो वो परफेक्टली एक ब्रेविस लैटिस शो करेगा, इसमें हाँ नहीं कर मतलब कुछ डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सपोज ये एक ना, ये क्यूब है, ओके, ये सब रेक्टेंगुलर ए बी सी है, ऐसा नाम के लिए लिख दे रहा हूँ ए बी सी, ओके। और एक स्क्वायर ले लो, स्क्वायर है ए बी सी, ओके। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे पीछे ए बी सी लिखा है, और पीछे से कोई आए उसको घुमा के चला जाए, ओके, सपोज घुमा के चला गया इसको, हाँ 90 डिग्री से जो भी है। अब मेरा सी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, बी आ गया, सी आ गया। अभी नंबर लिखे मैंने, एक्चुअली है यहाँ पे है नहीं, तो मैं जब इसको देखूंगा तो मुझे कोई डिफरेंस दिखेगा इसमें क्या? अगर मेरे पास ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई रेक्टेंगुलर शेप पड़ा हुआ है और कोई आके इसको से घुमा के चला गया एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर, मुझे थोड़ी दिखेगा कि वो चेंज है, वो सेम है, ओके। सो इसी तरह से अगर मेरे आसपास जो भी देख रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या चेंज हुआ, द एनवायरनमेंट इज एक्जेक्टली सेम। यहाँ पे रेड बॉल है, यहाँ पे यहाँ ब्लू है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड दिखना चाहिए, ऐसा नहीं घूमने पे इधर आके ये ब्लू हो गया, रेड हो गया। My surrounding should look like exactly same. Another point is you should be able to write your lattice vector, okay, position vector in terms of your primitive vectors, okay. Then it is your what Brevis lattice, okay. अभी करेंगे, अभी तो आगे बताएंगे और करेंगे तो समझ में आएगा, तुमको भी धीरे समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर नॉन Brevis lattice, okay. Now what I want to discuss, time तो बचा नहीं है, okay, I want to discuss this geometry in 2D, okay, अभी तो होगा नहीं, कल ही करते हैं इसको, ठीक है। So now I will discuss this two dimensional lattice होते हैं, actually two dimensional lattice होता नहीं है, okay, but if it is just simplification, okay, so if two dimensional lattice है, then total कितने Brevis lattice हो सकते हैं, okay, कितने टाइप डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट हैं, कि जो भी लैटिस, जो भी क्रिस्टल बनेगा वो उसका लैटिस अरेंजमेंट उसी टाइप का होगा। जैसे तो इन 2D you have 5 Brevis lattices, okay, and in 3D all of you know there are 14 Brevis lattices, okay. In 14 Brevis lattices से you can make any crystal structure. Let me discuss here one more thing, unit cell, okay. Unit cell क्या होता है, okay, unit cell क्या है? Unit cell is a fundamental building block, fundamental building block, okay, fundamental building block, okay. When there is a fundamental building block, when okay, by or by repeating, okay, it's a fundamental building block by which by repeating, okay, its own dimension, by repeating its own dimensions, okay, fundamental building block which can create, okay, which can create whole crystal, which can create whole crystal by repeating its own dimension in all directions, okay. So जैसे मेरे सामने एक वॉल है, तो वॉल का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एक ईंट है, ओके, ईंट है।
अब ईट तो क्या एक ईट भी हो सकती है, 2 ईट भी हो सकती है, 4 ईट भी हो सकती है. आई कैन मेक द वॉल यूजिंग सिंगल एलिमेंट. ओके, सिंगल बिल्डिंग ब्लॉक, और 4 को मिला के भी आई कैन क्रिएट द वॉल. सो यूनिट सेल क्या यूनिक नहीं होती है. सो unit cell means is a fundamental building blocks which can create whole crystal, okay, by repeating its own dimensions, okay, in all directions. Okay, उस खुद को रिपीट करके it can create a crystal. जैसे ईट can create, ईट के ऊपर ईट रखने से you repeat itself again and again, that can make a crystal. Okay, so this is your unit cell. Okay, now unit cell also can be 2 types. ये इसको रब कर दूं क्या? Yes, Yes, sir. sir. Now unit cell also can be 2 type. Okay, unit cell also can be 2 type. One is primitive unit cell. Okay, and other is non-primitive. Okay, or we say conventional, जिसको हम जनरली यूज करते हैं, conventional unit cell. Conventional. Okay, now what is the difference between primitive and non-primitive? Okay, so let me draw a lattice. Okay, okay, so okay, so now if I take, okay, this is one more thing here, one more is the square lattice. Okay, so suppose if I take these two, no, not these two, I will take one more here atoms. Okay, so this atom, okay, so for example, if I take this as a unit cell, okay, so this is an example of primitive unit cell. This is example of primitive unit cell. Okay, primitive unit cell क्या होती है? The unit cell which has a smallest volume. Okay, unit cell with the smallest volume, okay, and contain exactly one atom, okay, then those unit cells are called your primitive. Okay, primitive cells. Okay, so let me मैंने सही draw किया नहीं किया मुझे. Let's just draw once more. This is my here. Okay, it's not symmetric. Let me draw it again. Okay, I think I did some mistake. So so we have a rectangular crystal. Okay, see, this is crystal, okay, and this is a crystal, and between there we have नॉन ब्रेविस टोटली प्रिमिटिव हो सकता है. एक मिनट, 1 2 3 4. Okay, so this is now exactly I want to draw. हाँ correct, ठीक है, बीच में I can draw. Okay, so say, okay, so this is my a primitive unit cell. और primitive unit cell क्या होती है? The unit cell with the smallest volume and contain exactly one atom. Okay, ना आपको पता ही है कि अगर ये चीज है तो this atom is a part of four cells. Okay, this atom is a part of 4 cells. That means each atom, the contribution of each atom in this unit cell is 1/4 only. Okay, इसका contribution 1/4, इसका भी 1/4 आएगा, इसका भी 1/4 आएगा, इसकी सराउंडिंग में पूरा क्रिस्टल है ना. That means this unit cell contain exactly 1 point. Okay, this is one thing. If I take this unit cell, okay, इसको भी रिपीट करके इसको रिपीट किया, फिर इधर आया, इसको भी रिपीट करके I can generate crystal. This is also your unit cell, but this is not a primitive unit cell. Okay, this is a non-primitive unit cell. This is called your non-primitive because it has a more than one atom in a unit cell. Okay, this is your non-primitive unit cell.
So हमको so our unit cell can be primitive or it can be non-primitive. जैसे in 3D, when you take 3D example, okay, you take unit cell as this one. You take this unit cell. You have a cube. Okay, this is the cubic primitive cubic unit cell. So you have 8 atoms here. Okay, and each atom contributes 1/8. So this is example of primitive primitive unit cell. Okay, this is a primitive cubic unit cell. Primitive cubic unit cell. Okay, Sir, but then Brava. हाँ बोलो. Sir, Brevis lattice non-primitive ना? Brevis lattice non-primitive कैसे हो जाएगा? यूनिट सेल बोल रहा हूँ भी. यूनिट सेल मतलब कोई भी एरिया वॉल्यूम जिसको रिपीट करके आप पूरे क्रिस्टल को जनरेट कर सकते हो. That is called your unit cell. I am talking about unit cell. Brevis unit cell. Brevis का क्या मतलब है? Okay. So this can be, this is a Brevis. Okay. This is a Brevis crystal also. This is also. Sir, he is Brevis lattice asking, also. sir. Sir, he is asking, sir, this is primitive Brevis lattice या non Brevis lattice? This is a Brevis lattice. Brevis lattice है ना sir? This is a Brevis lattice. Okay. Now this is your unit cell. So okay. हाँ. सब प्रिमिटिव लैटिस के प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए ब्रेविस और नॉन ब्रेविस से थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा. वो तो दोनों में हो सकता है ना प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में भी ब्रेविस नॉन ब्रेविस दोनों स्ट्रक्चर में हो सकता है ना प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो नहीं जरूरी नहीं है. जैसे एग्जांपल अभी देखो ये मेरे पास ये है. हाँ जैसे ये यूनिट है आपका. मैं इसको खोल रहा हूँ. This one. Okay, this one. This is my. Okay, this is also my unit cell. Okay, this is also my. This is a BCC. This is a BCC. ऐसे FCC है. ये simple cubic है. SC और primitive cubic. So now this is not a Brevis lattice. Okay, and this is not a primitive. This is also not primitive क्योंकि इसके अंदर दो atoms हैं और ये Brevis lattice भी नहीं है. Okay, ये Brevis lattice में नहीं है तो वो थोड़ी होता है. ठीक है. So Brevis lattice के लिए यूनिट सेट आएगा ही नहीं ना क्योंकि यूनिट सेल की हमारी नॉन ब्रेविस लैटिस जो हमारा होगा ना उसके लिए यूनिट सेल आएगा ही नहीं क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या है. यूनिट सेल मतलब वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक जिससे हम यूज करके पूरा क्रिस्टल बना सकते हैं. नॉन ब्रेविस लैटिस में परफेक्ट से एडजस्टमेंट होती ही नहीं है ना तो उसमें तो यूनिट सेल नहीं आएगा ना. कैसे सर हेक्सागोनल लैटिस में बन सकता है ना ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि एक ही एटम आए इनसाइड उसके. हमारे पास 3D में टोटल 14 ब्रेविस लैटिसेस हैं. ओके, so that 14 lattices में there are something which are primitive lattices and something which are not primitive. अब ब्रेविस नॉन ब्रेविस को इसमें मिक्स क्यों कर रहे हो? मैं समझ नहीं आ रहा. तुम लोग जबरदस्ती कहीं से भी कोई डेफिनेशन उसको मिलाने की कोशिश क्या कर रहे हो? लैटिस अलग चीज है. ब्रेविस लैटिस नॉन ब्रेविस लैटिस अलग चीज है. यूनिट सेल अलग चीज है. यूनिट सेल इज अ रीजन which can repeat itself, which can create a crystal. Okay. So let us discuss me tomorrow. Okay, आगे 2D lattices and 3D lattices. Okay, अगर कोई क्वेश्चन है तो डाउट है तो मुझे भेजो. I'll see what you want to ask. Let's stop here. हाँ बोलिए. Sir, for this topic which book we will study? बुक तो वही है अपनी जो सॉलिड स्टेट की फेमस किटल की बुक है. ओके, और अदर उमर अली की बुक है. जो भी कोई बुक आप स्टैंडर्ड बुक आप यूज कर रहे हो अपने. ओके, सेम एनी बुक यू कैन यूज. और इंटरनेट पे भी खूब मटेरियल अवेलेबल है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में. यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, ओ पिल्लाई करके भी एक बुक है ना उसमें. हाँ वो भी अच्छा है. उसमें भी अच्छा है. ओके सर. हाँ. How we will say primitive vectors are linearly independent? तो कैसे कैसे करोगे उसको लिनियर इंडिपेंडेंट? ओके, लिनियर इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते.
हाँ, सब अलग डायरेक्शन में है, एक ही प्लेन में थोड़ी है, दे आर नॉट इन वन प्लेन, तो दे कैन नॉट cancel out each, you cannot cancel out each other ना. Okay, you can cancel out a1 by 2 to a2 or something. Okay, you cannot write Okay. them like a linearly independent vectors. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. सर Thank you, sir. Thank you.